हेलो हाय साज। हाँ। चलिए दिखा दीजिए व्हाट आर योर अदर डाउट्स, फिर न्यू टॉपिक से शुरुआत करेंगे। Uh, in this question, it's about impairment. There is no credit accumulation impairment account. They always credit accumulated depreciation and impairment debit impairment expense. क्वेश्चन क्या है आपका? Question is, you told me that we have to नो नो, आई मीन credit. व्हाट इज योर डाउट? जी, company determined that due to obsolescence the equipment with the original cost of 900k with accumulated depreciation was 420 had suffered a permanent impairment. So what is your carrying value? 80 plus there should be 5, so 480 is your balance after accumulated depreciation, and you have a value of 480 as a book value, and as a result they will have a carrying value of only 300k at the beginning of the year. That means they are saying there is a 180,000 of permanent impairment loss. In addition, the remaining useful life of the impairment is reduced from 8 years to 3 years. So this is the remaining useful life. Assume a straight line depreciation. What amount they should report on 31st of December year 9 as a accumulated depreciation. So what is your revised book value now? 300k. 3 years is the useful life, so 100k is the new depreciation. So 100 plus 500, 420, that comes to 520. So 520 is your accumulated depreciation and 180 is your accumulated impairment. So your accumulated depreciation will be 5,20,000 dollars. Why your answer is C? Sorry, D कैसे आया आपका? Mm, So 100k is the incremental depreciation for year 9, लेकिन आपको पूछा है accumulated depreciation. It means the total depreciation. So if you see till January 1 year 9, you have provided 4,20,000 of depreciation. Plus a new depreciation will be 300k revised carrying value divided by 3 years of remaining useful life, so that's 100k. So what is accumulated depreciation for 31st December year 9? That's 5,20,000 dollars. ये आपका आंसर हो गया. If they ask you what is accumulated impairment, then accumulated impairment will be 1,80,000. And then what is the total depreciation plus impairment? It is 7 lakh dollars. but the answer is B. गलत है आंसर. फिर डेप्रिसिएशन अलग होता है विच इज ईयर ऑन ईयर. इम्पेयरमेंट होता है जब भी देयर इज अ इंटरनल और एक्सटर्नल एविडेंस, एंड इम्पेयरमेंट इज रिपोर्टेड इनटू अ सेपरेट अकाउंट. This is an AICPA question. एआईसीपीए है, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन है गलत है तो गलत है. This question. यस, पहले क्वेरी बताओ. व्हाट इज योर क्वेरी? I'm not able to understand what to do in present value and annuities here. ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू को आज करते हैं, उसके बाद आपको पता लगेगा. बट लेट मी जस्ट क्विकली सी व्हाट दे आर सेइंग. July 1, Tracy Company sold a machine for a non-interest bearing note. The note requires a 10 annual in repayments of $10,000. They have made a first payment. Similar note, okay. Similar note 8%, इसका मतलब है there is an imputed interest method here. ठीक है, ये आपको फार 4 का थर्ड चैप्टर जो है प्रेजेंट वैल्यू, उसके बाद ही समझ में आएगा. Okay. ठीक है, एनी एल्स, एनीथिंग एल्स जो अब तक कुछ भी क्वेरी हो? The yesterday's calculation and the construction accounting is still. कौन सा कैलकुलेशन समझ में नहीं आया? जो weighted average में जो मसला था कल. सो दैट इज रॉन्ग. तो हमने कल कंक्लूड तो किया था जो हमारा कैलकुलेशन है वो सही है. आपका जो बार का पीडीएफ है उसमें जो एग्जांपल्स दिए है, क्या उसमें वेटेड एवरेज एक्सपेंस किए हैं उन्होंने? वो एग्जाम्पल छोटा दिया.
बुक में। छोटा तो, बड़ा कुछ नहीं होता है तो उसमें कोई कॉन्सेप्ट। डिटेल्स नहीं है, लेकिन जो उनने मतलब एमसीक्यूज वगैरह जो दिए थे बैकर में, दे आर डूइंग वेटेड एवरेज देयर। सो यू शुड नॉट। आप या तो एक्सपेंस को वेट करो, लेकिन तो फिर आपको इंटरेस्ट पूरे साल का लेना पड़ेगा। हम लोग एनीवेज हमारी मेथड में इंटरेस्ट को वेट कर रहे हैं, विच इज मोर प्रोमिनेंट मेथड। क्योंकि जो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट है, दैट क्लियरली सेज कि आप कैपिटलाइज कब से करोगे। सो द डेट व्हेन एक्सपेंस इनकर्ड और डेट व्हेन लोन टेकन, विच एवर इज लेटर। So there is no point of waiting out the expenses. Yes, you should always have to wait factor the interest component, जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितने महीने का आपको कैपिटलाइज करना है। बिकॉज बैंक को तो आप पूरे 12 मंथ्स का इंटरेस्ट पे करोगे, आपने लोन ले लिया है। बट वो 12 मंथ्स में से कितना आपको कैपिटलाइज करना है, जो इंटरेस्ट अमाउंट को यू कैन वेट इट आउट, बट नॉट टू द एक्सपेंडिचर्स। And the construction accounting thing. व्हाट इज द क्वेरी इन कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग? Didn't we say we'll discuss later? हाँ. कौन करो कौन सी चीज में बोला था? बिकॉज इट वाज अ बिग एग्जांपल। आई थिंक हमने सारी एंट्री देख ली थी ना, इंक्लूडिंग योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कब जाता है। आओ, आप बोल रहे हो कि आपके बैकर में बोला है डिफरेंस, लेकिन आप मुझे भेजो तो सही एक बार एग्जांपल आपके बैकर वाला, आपने मेरे को कहाँ भेजा है? Okay. ठीक है, सो यू आर आस्किंग कि वो लोग जो डिफरेंस है उसको वो सीआईपी में लेकर क्यों जा रहे हैं? CIP, or and we also didn't then we didn't discuss point in time because we are confused for CIP. पॉइंट इन टाइम में सीधा है, नो इंटरेस्ट विल पास फॉर फर्स्ट 3 years, यू विल वेट फॉर 100% प्रोजेक्ट कंप्लीशन ओनली इन फोर्थ ईयर एंट्रीज आर पासिंग। सो एंट्रीज रिमेन सेम, इट्स ओनली अबाउट द टाइमिंग। कि फर्स्ट ओवर द पीरियड में आप हर साल एंट्री पास करते हो, एट अ पॉइंट में आप फोर्थ ईयर के एंड पे जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है तभी आप एंट्री पास करते हो। चलिए एक बार शुरू करते हैं न्यू कॉन्सेप्ट, और आप मुझे भेज देना, कल उसके ऊपर बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है, यू हैव टू गो थ्रू द सेल्फ ऑन दिस मीटिंग इटसेल्फ, बिकॉज हमने ऑलरेडी ये चीजें मल्टीपल टाइम डिस्कस करी है। मैं आपको पहले एक बार रिवाइज कराता हूँ कि हमने क्या डिस्कस किया है, एंड देन यू हैव टू गो थ्रू द एग्जांपल्स। सो जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स कर रहे थे बैक इन फार वन, वी अंडरस्टैंड द फ्यू अकाउंटिंग प्रिंसिपल विच वर मैचिंग प्रिंसिपल। we understand what is the accrual method of accounting. एक बार मैं quickly recap दे देता हूँ। Matching principle says that you match the expenses to the revenue. So whatever expenses help to generate the revenue, they are recorded in the same period. Classical example of matching principle, bad debt या inventory, उसका जो cost of goods sold होता है वो। Then we understand accrual method of accounting. Accrual method में बोलता है expenses which are already incurred but not yet paid, you still have to record those expenses in those period. अब आपके एक्सपेंस दो तरीके के हो सकते हैं। वन कैन बी अ प्रोडक्ट कॉस्ट, इसका मतलब है इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। या एक होता है पीरियड कॉस्ट, इसका मतलब है कि the expenses they are not directly linked to the sale of your goods, rather it represents the period for which a certain activity was done. For example, आपने फैक्ट्री रेंट पे ली 12 मंथ्स के लिए, सो रेंट एक्सपेंस हैज टू बी रिकॉर्डेड इन दैट 12 मंथ्स ओनली। आपने एक प्रीपेड इंश्योरेंस पे किया 3 इयर्स के लिए, सो वॉट एवर 12 मंथ्स फॉल इन दिस फाइनेंशियल ईयर, आपको उसका एक्सपेंस इस साल में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सो वॉट एवर एक्सपेंस दे रिप्रेजेंट्स योर पीरियड ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, they are called a period expenses, and whatever expenses they are related to your products, finished goods, they are called inventory related expense, which are a cost of goods sold, जो डायरेक्टली रेवेन्यू से मैप होता है। ये कोई भी चीज आपकी बुक में नहीं लिखी है, आई एम जस्ट गिविंग यू अ रिकैप व्हाट वी डिड बैक इन द फार वन। अब ये चैप्टर वर्क इन प्रोग्रेस कहाँ जाता है? वर्क इन प्रोग्रेस इज अ एसेट। अगर आपको अभी भी वो एक्सपेंस लग रहा है तो वी आर वीक एट द कॉन्सेप्ट्स। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है यू आर कंस्ट्रक्टिंग अ नॉन करंट एसेट, यू आर मैन्युफैक्चरिंग इट, and you are keep incurring the expenses which are capitalized but asset is not yet ready to use. So work in progress is the item in balance sheet under non-current assets. Okay. अब आते हैं हम लोग ट्रेड पेएबल्स पे। वी डिड अ चैप्टर सिमिलरली इन फार 3 फॉर अकाउंट्स रिसीवेबल, जहां पर हमने ग्रॉस मेथड और नेट मेथड देखी थी। सो व्हाट वी से कि आपका फॉर एग्जांपल $100 का सेल है, एंड लेट्स से द पेमेंट टर्म्स आर net 30 2/10 if you pay in
10 days of time, 2% discount you will get. Either आप पहले ग्रॉस अकाउंटिंग कर सकते हो, विच मीन्स यू रिकॉर्ड अकाउंट्स रिसीवेबल एट 100, रेवेन्यू एट 100. अगर कस्टमर ने डिस्काउंट अवेल किया, देन यू विल रिकॉर्ड दैट एज अ डिस्काउंट विच इज अ रेवेन्यू डेबिटेड टू कैश क्रेडिटेड $2. तो दैट इज द मेथड नंबर वन विच इज अ ग्रॉस मेथड. या आप नेट मेथड कर सकते हो कि आप सबसे पहले ही अकाउंट्स रिसीवेबल और सेल्स 98 से बुक करोगे. If customer avails the discount, all is good. There is no problem. If customer does not avail the discount, then you will re-recognize or true up your revenue by $2 more, and your revenue will increase to $100. Similar concept, but it's a flip now. You are on the purchase side, expense side. So you are on a trade payables side. Concept में कोई change नहीं है. Quickly go through करो example number 1 and example number 2. अगर ना समझ में आया तो मुझे बताओ. Okay. अच्छा, बिफोर वी अगेन कंटिन्यू फर्दर, योर फादर वाज आस्किंग कि आपका एग्जाम डेट आपको कब बुक करना है. You have any idea in mind, or you want to still first complete the syllabus, then you will assess? Uh, so the scoring date. Let me see. वो हमेशा 20-25 डेज का टाइम पीरियड रहेगा. मे बी अगर आप समटाइम्स यू विल गेट विद इन अ वीक, समटाइम्स यू विल गेट इन अ मंथ. तो आपको वो 10 डेज से 30 डेज का विंडो ऑलवेज मिलेगा फॉर वेटिंग पीरियड. Based on your calculation, when is the syllabus ending? Last time you said July 10. Is it the same now or is it हो different now? जाएगा. हाँ हाँ, जुलाई 10 हो जाएगा, बिकॉज फार 4 इज ओनली द बिग थिंग. फार 5 हम लोग एक दिन 6-7 आवर्स कंटिन्यूअस बैठ के खत्म कर लेंगे कंसोलिडेशन. आई जस्ट हैव टू एक्सप्लेन यू द फॉर्मेट. हम लोग बैकर नहीं करेंगे थियरी. वी विल स्ट्रेट अवे सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स. एंड फार 6 में भी देयर आर कपल ऑफ मोर कॉन्सेप्ट्स, तो वो हो जाएगा. आई थिंक जुलाई 10 शुड बी गुड. हम लोग क्लोज कर लेंगे सारा सिलेबस. My only worry is that maybe in 2 weeks I cannot uh, do enough questions and revise properly, and because the cutoff is July 23rd, so हम्म. that's why I'm thinking of the next period. अगस्त में आप कर सकते हो फिर. मे Yeah, बी so अराउंड the 15 so अगस्त. before August 15th. हाँ, अराउंड अगस्त 15 के आसपास जो भी आपको विंडो मिलती है. Yes. ठीक है, चलिए एग्जांपल नंबर 1 नो क्वेरीज चलते हैं. एग्जांपल नंबर 2 एक बार देख लो क्विकली.
देख लिया। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट पेबल होल्ड करते हैं अभी के लिए। वी हैव अ सेपरेट चैप्टर विच इज बॉन्ड, बट एक बार सिर्फ ये पोर्शन देख लेते हैं व्हाट वी आर सेइंग। So short-term and long-term debt instrument with a stated rate whose payment date does not coincide with the fiscal year end will result in an interest payable balance at the year end. So for example, you have taken a 5 years of bank loan and bank loan is not yet repaid. And let's say you pay a principal and interest on 30th September every year. So let's say you follow January to December calendar year. So when you reach to a 31st December 2026, you will have a 3 months of accrued interest for October, November, and December period, which has been accrued for the current year, but it is not paid yet. It will be paid in the 30th September next year. So the amount of this kind of nature, so the amount accrued should represent the interest expense incurred that has not been paid in a cash at the balance sheet date. So in our example, 3 months का interest is accrued, but it is not yet paid on the balance sheet date. तो उसको हम लोग still treat करेंगे as a accrual. Your entry will be interest expense debit to interest payable. अब ये इंटरेस्ट पेबल बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम एज आई सेड वी विल सी इन दी नेक्स्ट चैप्टर्स जब हम लोग बॉन्ड्स करेंगे। यू मे हैव अ 10% इंटरेस्ट रेट ऑन द फेस ऑफ द अग्रीमेंट, बट यू माइट बी कैलकुलेटिंग एवरीथिंग एट 9% व्हिच इज योर इम्प्यूटेड इंटरेस्ट रेट। तो दोनों में क्या फर्क होता है, हाउ अमोर्टाइजेशन वर्क, हाउ अनवाइंडिंग विल वर्क, एवरीथिंग वी विल अंडरस्टैंड इन डिटेल इन अ फ्यू मिनट्स और मे बी द टुमारो सेशन। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है करंट पोर्शन ऑफ द लॉन्ग टर्म डेट। अब ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि लेट्स कंटिन्यू द सेम एग्जांपल। यू हैव अ बैंक लोन यू हैव टेकन ऑन 1st January 2026 और आप हमेशा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को रीपे करते हो 30th सितंबर को। नाउ व्हेन यू आर क्लोजिंग द बैलेंस शीट ऑफ 31st December 2026, आपने अक्रू कर लिया है इंटरेस्ट पेएबल 3 मंथ्स का, प्लस यू हैव अ लॉन्ग टर्म लोन पेएबल। अब लॉन्ग टर्म लोन जो है पेएबल उसके दो पार्ट होते हैं। सो लेट्स गो टू दिस शीट एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। सपोज you have taken a bank loan. Let's say the value of bank loan is hypothetically 100,000, and as on 31st of December 2026 आपका जो आउटस्टैंडिंग लोन है, लेट्स से दिस इज 97,000, और आपका जो accrued interest है, let's say it is $8,000. I'm just using hypothetical number. Now when you prepare the amortization schedule, कैसे बनाते हैं देखेंगे, but when you prepare this amortization schedule, you know that on 30th September 2027 you have, let's say, a $17,000 payable from $97,000, and for the rest of the term you have $80,000 payable from the 97,000. So basically a 97,000 का दो breakup है। $17,000 you are going to pay within next 12 months, which is 30th September 2027, and rest $80,000 you are going to repay in future. So presentation point of view, in balance sheet your non-current liability will only represent $80,000. Your current liability will represent two things. One is a principal portion and one is an interest portion. So principal portion will be shown at a $17,000 and accrued interest will be shown as a current liability, which is $8,000. So effectively what you are saying, that whatever debt, even though the total loan is a non-current in nature, but whatever loan which is due for the repayment in next 12 months, that is called a current portion of a long-term loan and will be represented as a current liability, and remaining portion is your non-current portion of the non-current loan will continue to be presented as a non-current liability. ठीक है, a simple presentation concept है, clear है। Yes. एक बार रीड करते हैं। डेट इंस्ट्रूमेंट में बी सेटअप such that periodic principal payments are made during the life of the borrowing. In this case, principal which is due within the next year or a next operating cycle. अगर हमने basic first chapter किया था, either 12 months or operating cycle, whichever is longer. So whatever principal payments are due within next year or operating cycle will be represented as your current liability.
ठीक है, सो दिस इज द सेम थिंग जो हमने गूगल शीट में एग्जांपल्स में देखा. Now there could be a possibility that the current obligations जो आपके due है, let's say in this particular example you have a 17,000 due, but based on the financial conditions of your company, you know that you may not be able to repay this loan. Rather, you will refinance this loan to make sure that you get a good relief, you get a sufficient time to pay back this loan again. So suppose $17,000 which are due in next 12 months, you are planning to refinance it. And refinancing terms states that $15,000 are payable after 3 years and $2,000 no refinancing is available. So let's say you have taken this loan, this entire loan from Bank of America. Now Bank of America, you need to repay $17,000. But you again go to the bank manager and you say that, boss, I don't have 17,000 right now. Give me a refinancing. And Bank of America says, okay, let's restructure your loan. $15,000 you pay me after 3 years, but 2,000 you still have to pay to me. So now what will be your revised presentation? Your non-current liability will stand at $95,000. Your current portion of the principal liability will be a short-term liability, which is $2,000, and interest will be a short-term liability, which is $8,000. So if you refinance anything, then again a reclassification will take place where your current portion will again become your non-current liability. So under US GAAP, a short-term obligation may be excluded from the current liabilities and included in the non-current debt if company has the intention to refinance it on a long-term basis and the intent is supported by some evidence, either by actual refinancing prior to the issuance of the financial statement or an existence of a non-cancelable financing agreement from the lender having a financial resources to complete the financing. So here intention is important. So it may be possible that by year end, this entire refinancing agreement has not actually taken place. Only the conversations are going on. However, we know that we understand subsequent event accounting standard, the date when financials are prepared to the date when financials are issued. If in between that time, if the refinancing agreement is finalized, then okay, you can do a reclassification. Or even if by the end of the period for which financials are issued, the actual signature could not take place, but you have a non-cancelable agreement in place, maybe a MOU, not a full agreement, but a MOU between bank and your company, and the bank has a sufficient capacity to refinance the loan. So if this kind of evidence are available, even though actual refinancing has not taken place, you may still do a reclassification, because the purpose is to make sure the readers of your financial statements are not misled and they know that what is the exactly a current portion component and what is the exactly a non-current portion component. What's the second point? The Second existing. point, if you don't have a full agreement in place, but you have a non-cancelable MOU, or let's say agreement to enter the finance, or let's say any other commitment which is signed with a lender, and the lender has a financial capacity, that lender will not default to help you to refinance the loan. So your entry will be short-term debt debit to long-term. So basically, again, you bring out the short-term component and you again club to a long-term liability portion. चले नेक्स्ट सेक्शन पे. Yes. अक्रूड एक्सपेंस लायबिलिटीज हमने बहुत बार कर लिया है. सो लेट्स स्ट्रेट अवे गो टू योर एग्जांपल्स में आप रिव्यू करना शुरू करो. एग्जांपल नंबर 3. अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मेरे को पूछ लो. आई विल बी बैक इन अ मिनट. आप शुरू करो एग्जांपल 3 देखकर.
Done. ठीक है, कोई भी डाउट एग्जाम्पल 3 में? No. चलो एग्जाम्पल 4 देख लो. How do we deal with sales tax? सॉरी आरवी. How do we deal with sales tax? आप बताओ, आपने कोई इंटर्नशिप या एनीथिंग हैव यू डन? हाउ यू अकाउंट फॉर जीएसटी, वैट और सेल्स टैक्स? No. ठीक है. सो आपने परचेस तो कभी ना कभी किया होगा. सो Yes. जस्ट यूएस में आपने कोई चीज परचेस किया जिसपे सेल्स टैक्स लगा हो? Yes. तो कैसा आपका इनवॉइस रहता है? सो व्हाट सॉर्ट ऑफ इनवॉइस यू गेट? So sales tax on the total amount. तो सपोज आपने हाइपोथेटिकली आपने परचेस किया मोबाइल फोन, लेट्स से प्राइसिंग $1000, एड टैक्स लेट्स से 10%, 100 एंड टोटल 1100. आपने पे कितना किया आपके वेंडर को? 1000, 100 या पूरा 1100? 1100. चलिए बढ़िया है. अब आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी जर्नल एंट्री बताइए. सो यू आर नाउ कंपनी, यू हैव सोल्ड अ मोबाइल फोन. आपने 100 सेल्स टैक्स चार्ज किया, आपको कस्टमर ने पूरा 1100 पे किया. सो व्हाट इज योर अकाउंटिंग एंट्री? Mm, Debit cash 1100. Credit inventory 1000. Uh, वो अलग अलग एंट्रीज बताओ. सबसे पहले मुझे सेल्स की बताओ, उसके बाद मुझे आप बताओ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की. दो, लेट्स नॉट मिक्स इट, हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. पहले सेल्स का एंट्री बताओ. credit revenues are 1000. बाकी 100? Tax payable चलो टैक्स पेबल आपने सही बोला, लेकिन क्यों बोला? because we have to give it to the government. परफेक्ट, एग्जैक्टली. जो सेल्स टैक्स चार्ज किया है कस्टमर को, ये आपका पैसा नहीं है. दिस इज द मनी यू कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर एंड यू हैव टू रेमिट इट टू गवर्नमेंट. So it's just you are an intermediary in the transaction when you where you are invoicing to a customer, you are collecting the money. आपका कितना पैसा इन्वॉल्व है? आउट ऑफ 1100 इनवॉइस, ओनली $1000 इज योर प्रॉपर्टी. $100 इज द गवर्नमेंट्स प्रॉपर्टी, तो गवर्नमेंट को आपको रेमिट करना होता है. So what will happen? $100 tax payable. You will have, let's say, 5,000 units of mobile phones sold throughout the month, and you have done a various transaction. At the end of the month, you find out your tax payable account has $90,000 balance. It means you have collected $90,000 from your customers throughout the month, which pertains to a government. You have to remit the tax to the government. So maybe next month on the due date, you will pay this amount to the government. So your entry becomes tax payable account debited to cash 90,000. Or let's say in our example, it will be $100. Now this is exactly how GST works, exactly how VAT works. यूएस में आप सेल्स टैक्स बोलते हो. जनरली इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, सिंगापुर है, दे कॉल्ड इट जीएसटी. यूके है, यूरोप है, दे कॉल्ड इट वैट. बट तीनों का पर्पस सेम है, इट्स जस्ट नेम्स आर डिफरेंट. इट्स अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्सेशन. जब कोई भी चीज परचेज होती है, उसके ऊपर यू इम्पोज अ 10, 20, 15, 18 वट एवर आर द रेट. यू कलेक्ट दैट मनी फ्रॉम द कस्टमर एंड देन यू रेमिट टू द गवर्नमेंट. अब विथ योर कॉन्सेप्ट क्लियर. यस The बोलिए. the tax expense on the income statement, do we have a journal entry for that? दैट इज इनकम टैक्स. दोनों चीजें अलग अलग है. द टैक्स एक्सपेंस विच इज ऑन योर इनकम स्टेटमेंट लाइन, दिस इज योर डायरेक्ट टैक्स. विच इज योर इनकम टैक्सेस. These are your taxes, your obligation, because you earn the net profit. And whatever here we are talking about tax payable, these are indirect taxes or consumption taxes, which you collect on the sales transaction and remit to the government. Both are different things. This is your far six when we will understand the deferred taxes.
We will understand how tax expenses are calculated. But this depends on how much net profit. Let's say your company earned $1,000 of net profit, and your country has 20% income tax rate. So you have to pay a $300 of taxes to government. So this depends on how much net profit your company is making. It has no relation to the customer. आपने कितना collect किया कितना नहीं किया. This is your expense you have to bear. This is not your expense, GST, sales tax. This is simply you collect from the customer, you pass on to your government. Okay. चलिए, now let's go through this example again. Entry में कोई doubt है तो मेरे को. No. चलिए next में चलते हैं. I'm not going to header because आपको कोई भी example question में exam में आ सकता है. So it is not important to know the headers. It is important to know whether we are able to understand the entry or not. चलिए example number 5. Why is FICA separate and withholding tax separate? छोड़ दो अभी के लिए. When we go to a regulation we will understand all this. Mathematics को ignore करो. Generally आपको numbers दे दिए जाएंगे. Just try to understand whether you are able to understand debit credits or not. इसका calculation tricky है. Somewhere employer is contributing along with employee. Amount का base change होता है. FICA is a different taxes. Withholding taxes are different taxes. Medicare are different taxes. Unemployment are different taxes. तो वो सारा टेक्निकलिटी हम लोग रेगुलेशन में देखेंगे. अभी के लिए just focus on the debit credit side of the accounting entry. In the second, the accounts change as well. The second one. And Sorry, the second amount, one. the additional entry. हाँ, And that the is employer portion. See, generally क्या होता है, just giving you a base, still we are not going to mathematics, कि there are some taxes which employer and employee both have to pay. So what is first entry is saying कि एक employee है, उसने $25,000 earn किए. Now it is employee's responsibility to pay $1,900 of FICA, $3,000 of income taxes. But generally, what happens when you do a payroll, you withhold this payment from the employee's paycheck and you remit on behalf of the employee to government. So what we are saying, our salary expenses are full $25,000, but we are only paying employee a cash of $20,087. We withheld FICA taxes from his paycheck, which is payable to government. So taxes payable account credit 1913. We also withheld the income taxes from the employee's paycheck, which is a withholding tax payable $3,000. Now on the due date, we will pay this taxes to government. So the entry will be FICA tax payable debit 1913, withholding tax payable account debit 3000 to cash account 4913. However, in USA, there are certain taxes where employer also has to contribute the equal taxes, which is not the responsibility of employee. The employee ने जो 25,000 earn कर दिया, आपने employee को 20,087 का paycheck भी दे दिया. But government is imposing additional taxes on the head of the employer now कि आपको भी contribute करना पड़ेगा, which is a FICA portion plus unemployment tax portion. कैसे calculation हुआ? Let's ignore it right now. So for example, employer के ऊपर expense आया 1913, unemployment tax का expense आया 500. Now these are the expense you cannot withhold from the employee's paycheck. This is your responsibility to deposit directly for the employee's benefit. So this is your payroll expense. So first entry is all about employer's taxes, which are withheld from the paycheck. Second entry, it's an employer's headache, employer's additional burden of the taxes, which cannot be passed to the employees. So the entry is payroll taxes account debit
Or you can even say FICA tax expense account debit, unemployment tax expense account debit to FICA tax payable to unemployment tax payable. But this is the employer's tax expense. It means additional taxes which employer has to pay over and above what are withheld from the employee's paychecks. What's the other entry you said? FICA tax expense account debit, unemployment tax expense account debit to FICA tax payable to unemployment tax payable. या तो आप दोनों टैक्स पेएबल को एक एक्सपेंस एक कॉमन हेडर में लेकर जाओ विच इज पेरोल टैक्स एक्सपेंस. बट कहने का पर्पस है दिस इज योर इनकम स्टेटमेंट अकाउंट एंड पेएबल्स आर योर बैलेंस शीट लायबिलिटी अकाउंट्स. Okay. चलिए एग्जांपल नंबर 6. Hmm, you need to explain this. चलिए एक्स कॉर्पोरेशन offers its vice president a bonus equal to 10% of the net income after deducting the taxes but before deducting the bonus. So for example, आपका income statement है. Let's draw a typical income statement. Suppose you have an income statement which has the revenue less cost of goods sold. You get a gross less expenses. Let's say less bonus. So you get profit before tax, less tax. You get profit after tax. So what is your question saying that your vice president is eligible at 10% of the 10% of the bonus on the net income. But this net income is not exactly profit after tax. This net income is after deducting the taxes, but before deducting the bonus. And obviously, you are checking what is the bonus you can give to your vice president. So suppose you have a revenue of $100, let's say cost of 20, which gives you a gross of 80, expenses of 10. You don't know what is the bonus expense. So without bonus, let's say your profit before tax are 30, assuming tax is 21, your profit after tax is 49. Now you have to identify that what should be the bonus expense. Lekin, when you put a bonus expense here, your profit before tax will change, your tax will change, your net profit will change. So there is a circular reference here. So once you update the bonus, your profit after tax keeps on changing. So you have to find out such a bonus number where once you plug the bonus number here, the profit after tax reconciles at a 10% level to this particular item. वापिस क्वेश्चन पढ़ता है. X corporation offers its vice president a bonus of 10% of net income after deducting the taxes but before deducting the bonus. Income without taxes or a bonus is 1 lakh. So आपको यहाँ पर दे दिया है. So let's say you are given at this point कि your gross minus expenses at this point you are at a 1 lakh figure. Now आपको 1 lakh में से bonus भी minus करना है, tax भी minus करना है in such a way that bonus figure is 10% of profit after tax but before bonus. And then you have to calculate the bonus amount क्या रहेगा. So let's say उन्होंने solution क्या किया है. You can use exactly the same methodology. So what they are saying, number one, equation number one, bonus क्या हो सकता है. तो bonus is 10% of $1 lakh minus taxes. ये question में बोला गया है bonus is equal to 10% of net income minus taxes but you don't deduct the bonus. सेकेंड टैक्सेस का कैलकुलेशन कैसे होगा आइडियली. तो सबसे पहले आपको 100K में से बोनस माइनस करना पड़ेगा. देन यू गेट अ प्रॉफिट बिफोर टैक्स और ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे आप इनकम टैक्स पे करोगे. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टैक्सेस. इट इज 40% ऑफ 1 लाख माइनस बोनस. नाउ देयर इज अ सर्कुलर रेफरेंस. आपको पहले इक्वेशन में टैक्सेस चाहिए लेकिन टैक्स फाइंड करने के लिए आपको बोनस चाहिए, लेकिन बोनस फाइंड करने के लिए अगर आपको टैक्स चाहिए. इट मींस यू कैन नॉट डायरेक्टली कंप्यूट दिस थिंग्स. तो आप क्या करते हो.
लेट्स रीफ्रेम द इक्वेशन नंबर 2। तो हमारा इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में हम यूज करते हैं बेसिक स्कूल मैथमेटिक्स जो हम करते थे। तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, बोनस इज इक्वल टू 10% ऑफ 1 लाख माइनस टैक्सेस की जगह में ये पूरा इक्वेशन को रिप्लेस करता हूँ। सो माई फर्स्ट इक्वेशन जो रिवाइज होगा वो कैसे होगा, बोनस इज इक्वल टू 10% ऑफ 1 लाख माइनस 40% ब्रैकेट 1 लाख माइनस बोनस। तो मैंने यहाँ पर जो टैक्सेस वर्ड लिखा है इसकी जगह स्ट्रेट अवे मैंने ये टैक्सेस वर्ड की जगह स्ट्रेट अवे मैंने 40% ब्रैकेट में 1 लाख माइनस बोनस को रिप्लेस कर दिया। नाउ लेट्स कॉल बोनस इज इक्वल टू बी, जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज, हमें पूरा वर्ड बार बार ना लिखना पड़े। सो बी इट मींस बोनस इज इक्वल टू 1 लाख इनटू ब्रैकेट 10% इनटू ब्रैकेट 1 लाख माइनस 40% ऑफ 1 लाख माइनस बी। तो जस्ट हमने बोनस की जगह वर्ड बी को रिप्लेस कर दिया। Now let's put this equation again जो मैथमेटिक्स हम लोग सॉल्व करते थे स्कूल में। सो बोनस b इज इक्वल टू 10% ऑफ ब्रैकेट ओपन 1 लाख माइनस 1 लाख का 40% इज 40,000 माइनस 40b, एंड दिस इज द माइनस, इट बिकम्स अ प्लस, माइनस माइनस प्लस, अ बेसिक मैथमेटिक्स। तो आपका रिवाइज्ड इक्वेशन क्या बन गया, b इज इक्वल टू 10% ब्रैकेट ओपन 1 लाख माइनस 40,000, 1 लाख का 40% प्लस 40% ऑफ b। इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई अप करते हैं। सो 1 लाख माइनस 40,000 बिकम्स योर 60,000। सो 60,000, अब ये इक्वेशन आप कैसे लिखोगे, b इज इक्वल टू 10% ब्रैकेट ओपन 60,000 प्लस 40% ऑफ b। इसको फर्दर मैथमेटिकली अगर हम सॉल्व करें तो b इज इक्वल टू 60,000 का 10% इज $6,000 प्लस 40% का 10% इज 4% b। सो b इज इक्वल टू 6,000 प्लस 4% ऑफ b। नाउ ये b है एंड दिस इज अगेन अ 4% b। इसको हम लोग एक साइड ले जाते हैं, which means 96% of the b is equal to $6,000. So what is your ideal bonus? Your ideal bonus has to be $6250। तो आपको यहाँ पर उन्होंने बोनस कैलकुलेट करने को बोला था। सो इट्स जस्ट द मैथमेटिक्स वी यूज्ड एंड वी आइडेंटिफाई व्हाट इज द बोनस कंपोनेंट व्हिच शुड गो इनटू योर इनकम स्टेटमेंट। Okay. ठीक, चलिए आगे चलते हैं। एग्जांपल नंबर 7, एक बार क्विकली देख लो, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। Okay. चलिए एग्जांपल नंबर 8।
Oh, no insurance coverage, and uh, what do they mean by that? सो फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हो, वो प्रोडक्ट के ऊपर आपके रिटर्न्स बहुत ज्यादा होते हैं, सो यू डिसाइडेड टू टेक द इंश्योरेंस कि जितना भी रिटर्न आएगा उसका 70% इंश्योरेंस कंपनी बेयर करेगी, 30% आप बेयर करोगे। या जनरली स्पीकिंग, लेट्स से आपके पास एक कार है, आपने कार का इंश्योरेंस लिया हुआ है, सो वॉट एवर डैमेज हैपन्स टू योर कार, इंश्योरेंस कंपनी इज गोइंग टू पे द क्लेम फॉर यू। सपोज आपने इंश्योरेंस नहीं लिया है, सो यू हैव टू नाउ प्रोवाइड अ लॉस। फॉर एग्जांपल, आपके पास कार है, कार का इंश्योरेंस नहीं है, बट बेस्ड ऑन द पास्ट इवेंट आपको पता है कि एवरी ईयर यू इनकर $10,000 ऑफ द रिपेयर एक्सपेंस जो इंश्योरेंस कवर कर सकता था। Now, because you don't have an insurance, that means this expense will be going out of your own pocket. So you prepare a provision for future anticipated loss. So your entry is claim for expense, or let's say repair expense account debited to unpaid claims, or a provision for your future expense liability. Let's say that is $10,000. Now during the year आपने actual में कार को डैमेज किया only $7,000 का, which you have paid from your pocket. Now you already have created a $10,000 of provision, out of which $7,000 are paid. So your second entry is provision for claims or unpaid claims account debited to cash, $7,000. जनरली कोई मार्केट में करता नहीं है, इफ देर इज अ हाई रिस्क आप जनरली इंश्योरेंस लेते ही हो। बट अगेन द थिंग्स टू टेस्ट कि आपने कोई चीज का पहले अक्रूवल बनाया, फिर वही चीज पे आउट होती है, तो वो अक्रूवल अकाउंट से ही रूट होती है। सो हियर यू क्रिएटेड अ लायबिलिटी अकाउंट व्हिच इज अनपेड क्लेम्स लायबिलिटी। व्हेन यू सेटल द लायबिलिटी, you debit the same account which is unpaid claims liability. Yeah. चलिए, नाउ वी विल स्टॉप इट हियर। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है which is ARO, which is called a disposal liability, a part of PPND, लेकिन हम liability section में इसको क्रिएट करते हैं। बट बिफोर वी लर्न दिस, हमें अमोर्टाइजेशन शेड्यूल लर्न करना पड़ेगा। आई एम गिविंग यू अ बिट ऑफ कॉन्सेप्ट, उसके बाद हम लोग ये टॉपिक पे कल आएंगे। सपोज आपने एक जगह ली फैक्ट्री, एंड वो फैक्ट्री पे आपको कंस्ट्रक्शन करना है फॉर योर प्लांट एंड मशीनरी। सपोज आपने जो फैक्ट्री लिया है दैट इज फॉर 10 years ऑफ लीज। इफ लेसर इज सेइंग कि जब आप ये फैक्ट्री खाली करोगे, आई नीड माई फैक्ट्री बैक इन दी ओरिजिनल कंडीशन, मतलब जो चीज जैसी है मुझे वैसी वापस चाहिए। आपको आपके प्लांट एंड मशीनरी हटाने पड़ेंगे, मेरी लैंड जैसे पहली थी मुझे वैसी करके देनी पड़ेगी। दैट मीन्स यू हैव अ रिटायरमेंट ऑब्लिगेशन। जब आपका एसेट, आपका पीपीएनडी डिस्पोज होगा फ्यूचर में, उसके साथ साथ यू हैव अ ऑब्लिगेशन टू ब्रिंग द एसेट बैक इन ओरिजिनल कंडीशन। तो ये पैसा आपको 10 years के बाद इनकर करना है। लेट से आप जो प्लांट एंड मशीनरी आज बना रहे हो, 10 साल के बाद आप उसको डिस्पोज करोगे, फिर लैंड को आप अगेन स्टेबिलाईज करोगे, ऑल द एक्सपेंस आर गोइंग टू इंकर एट द 11th year। लेकिन आज उसकी लायबिलिटी तो ड्यू हो चुकी है, बिकॉज यू नो देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, हम लोग देखेंगे डिटेल में। सो हाउ यू डू अ प्रेजेंट वैल्यूएशन, हाउ यू रिकॉर्ड अ लायबिलिटी टुडे, हाउ यू प्रिपेयर द अमोर्टाइजेशन शेड्यूल फॉर इट, और ईयर ऑन ईयर उसकी क्या एंट्री होगी हम लोग देखेंगे। वंस वी सी दैट एग्जांपल, हम लोग एक और चीज करेंगे जो आई थिंक हमने लास्ट एग्जांपल की छोड़ी हुई है। आई डोंट नो वेदर इट इज इम्पेयरमेंट, चाहे कौन सी शीट में है, बट इफ यू रिमेंबर द लास्ट एंट्री, हमने यहाँ पर एक शेड्यूल ड्रॉ किया था विच वी डिड नॉट कंप्लीट फ्रॉम द पीपीएनडी। वो एग्जांपल को हम लोग कल कवर करेंगे। सो फॉर टुमारो हमें कवर करना है पहले ये अमोर्टाइजेशन शेड्यूल का अंडरस्टैंडिंग। Once this is done, we are going to learn about how ARO and cost of disposals are getting recorded, how unwinding happens, उसकी entries क्या होती है। Little bit complex topic, हमारे पास कल volume नहीं है करने के लिए। We may just cover a one concept, but it will take the entire session. एक होमवर्क है आपके लिए जो आपको करना है, I think by end of this week. This is all about your chapter number 3, which is present value of the money. Yes, this chapter, ये आपको आपके एंड से करना है। कोई क्वेश्चंस है तो आई कैन हेल्प यू, बिकॉज दिस इज अ स्टेटिस्टिक चैप्टर जो आपको आपके स्कूल में आता है कि आपने $100 का एफडी इन्वेस्ट किया 6% पे, नेक्स्ट ईयर आपको 106 मिलेगा। सो व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द करंट कैश फ्लो, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युइटी, what is the future value of the cash flow, what is the future value of the annuity,
इसका कोई लॉजिक नहीं है अकाउंट्स में, बट वी आर गोइंग टू यूज दिस अ लॉट इन अवर बॉन्ड्स अकाउंटिंग एंड लीज अकाउंटिंग टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यूज। तो ये चैप्टर जो है ओनली टिल इलस्ट्रेशन नंबर 5, 1 to 5, ये आपको खुद से करना है। फॉर्मूलाज यू कैन रेफर टू योर स्कूल बुक्स कि कैसे करते हैं, बिकॉज वी जनरली नाउ यूज द एक्सेल टू कंप्यूट ऑल दिस थिंग्स। मैं आपको लॉजिकल चीजें बता सकता हूँ कि ये फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकली है। एंड देन वी आर गोइंग टू यूज दिस कॉन्सेप्ट मंडे ऑनवर्ड्स, जब हम लोग बॉन्ड्स एंड लीज अकाउंटिंग करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए। सो दिस इज योर होमवर्क टिल द फ्राइडे। ओनली थर्ड चैप्टर का प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूलाज आपको गो थ्रू करना है। एंड टुमारो वी विल कम बैक, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड असेट रिटायर पार्ट। फ्राइडे को हम लोग कंटिंजेंसी खत्म करेंगे, अ वेरी स्मॉल टॉपिक, इजी टॉपिक टू गो थ्रू। एंड देन मंडे ऑनवर्ड्स बॉन्ड्स, मे बी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे बॉन्ड्स, थर्सडे फ्राइडे लीज अकाउंटिंग। So by next Friday, we will be done with the FAR 4. Then the next one will be a 6 hour or 8 hour session for consolidation. And then we will be left only with the FAR 6. Sure. Okay, with this, we will call it a day. So I'll see you tomorrow. Thank you.